Hello my dear friends, welcome back to Sparkle with Jyoti. Today's video is going to be about how strangely, like in strange ways, Sweden has changed me. And if you, just for a background, I have been living in Sweden last 8 years and I have a lot of experiences, a lot of experiences to share with you, a lot of mistakes and a lot of learnings from living in Sweden. And I would be really happy to share with you if you are planning, or even if you are living here in Sweden. It's always good to have another perspective and not to repeat the mistakes which others have done, right? So if you're interested in this topic, then please keep on watching. And before that, I highly request you to please subscribe to the video, to subscribe to the channel. That will mean a lot to me, and so that you can get notifications of newer videos whenever I post it, and you can be the first one to view it and also get in touch with me if you have any comments or if you have any questions, right? So yeah, thank you so much for subscribing, and now without further ado, let's get started. I think the first number one point definitely would be about light. I have so much high respect now for light and sun and sunlight. Anything to do with light, I think, because in Sweden, अगर आप यहाँ पे नहीं है, अगर आपको पता नहीं है, तो basically यहाँ पे like 4 to 5 months काफ़ी अंधेरा होता है. Like it starts I think around end of October, November से लेके April तक you have winter, and it differs every year. I mean मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए, बट देयर वाज अ ईयर आई रिमेंबर कि यहाँ पे मई में भी स्नो हुआ था. सो यू नेवर नो, लाइक एवरी ईयर द वेदर चेंजेस. तो आप ऐसे मतलब बोल नहीं सकते हार्ड एंड फास्ट कि ओके दिस इज द लास्ट डे ऑफ विंटर और इसके बाद यू नो. बट यूजुअली द अप्रॉक्सीमेटली द टाइम फ्रेम्स आर ऑलमोस्ट सेम. तो मई के बाद डेफिनेटली यहाँ पे समर होता है टिल जुलाई अगस्त, और फिर उसके बाद autumn, and then you have winter, and then officially in March you have spring. So ये जो stark changes है seasons में, वो काफ़ी actually it's good. I like that about Sweden कि यहाँ पे आप weather changes आपको हिट होता है, आपको समझ में आता है कि ओके यू नो दिस इज द थिंग. फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग यू हैव दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स, पिंक फ्लावर, चेरी ब्लॉसम्स एवरीवेयर, और ऑटम में सब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं. देयर इज लाइक ऑल लीव्स टर्न ब्राउन एंड रेड एंड ऑल दैट. it's beautiful, and you can make out the different seasons. So that is the one thing I love about Sweden. But definitely Sweden has changed my perspective and my view about sunlight. I think जब हम इंडिया में होते हैं, especially मेरे केस में भी, you underestimate sunlight and you always say कि अरे कितनी गर्मी है, it's so hot, and आप you know you try to cover yourself, try to protect yourself. और यहाँ पे आने के बाद आप लिटरली तरस जाते हैं, मतलब लिटरली यू गेट सो डेस्परेट फॉर सनलाइट. अभी यहाँ पे काफ़ी दिनों से सन आया ही नहीं है, मतलब आई थिंक लास्ट 2 महीने से आई थिंक 1 या 2 बार सिर्फ सन आया होगा, एंड दैट टू लाइक इट कम्स एंड गोज़ वेरी क्विकली. तो आपको प्रॉपर जो सनलाइट नहीं मिलता, उसके वजह से आपको विटामिन डी नहीं मिलती, एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्चुअली health factors which are dependent on sunlight. And if you don't have sunlight, then आपको body pains होते हैं, joint pains होते हैं, lot of vitamin deficiencies you get in your body because of the lack of sunlight. So I can definitely see all these changes in myself over the years. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब I respect sun and the light nowadays, और उसके वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें आप change लाते हैं. सो बेसिकली आई हैव लाइक स्मॉल कैंडल्स इन द हाउस. फेरी लाइट्स यहाँ पे काफ़ी लोग लगाते हैं, विंडोज़ में लगाते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव दिस ऑरेंजिश लाइट इन ऑल द स्वीडिश हाउस होल्ड्स विच काइंड ऑफ गिव्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, मतलब ड्यूप फॉर सनलाइट आप बोल सकते हैं. तो उसके वजह से आपको थोड़ा बेटर लगता है. But overall it's very depressing period. आपको काफ़ी easily depression आ जाता है, mood swings हो सकते हैं, आपको डल लगता है, and you don't feel like doing anything, lack of energy, you feel sleepy, and all these factors are responsible because of lack of sunlight. तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी मतलब strange लगी हैं, and काफ़ी changes मुझे खुद में करने पड़े हैं because of this. I have to adapt to lack of sunlight, and I have to make छोटी छोटी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके आपके लाइफ में लाइट लाने की कोशिश करते हैं. सो डेफिनेटली इट हैज़ इंक्रीज्ड माई रिस्पेक्ट फॉर सन एंड सनलाइट back in India or whichever home country you're coming from where sunlight is there, right?
The second thing what I think has changed me, of course, I have been like a kind of a disciplined and punctual person. Interesting fact about me is that I don't need an alarm. Basically, I mean, from childhood I learned this trick. One of my teachers taught me that suppose I want to wake up at 5 o'clock in the morning, I just have to think about it before going to sleep कि आपको किस time पे उठना है. Suppose 5 o'clock उठना है, and automatically your eyes will open at 5 o'clock. So this is kind of a I don't know, a habit or something, you know, I have practiced over the years, and it's usually I wake up. So I think 99% I wake up, and if I have to travel somewhere, if I have an early flight, or if I have any other task to do and I'm supposed to wake up that particular time, I just think about it before going to sleep, and then I wake up. So usually I don't have any problem with that. But living in Sweden and being in Sweden has completely changed my viewpoint and my perspective about timing. मतलब इतना punctual यहाँ पे सब कुछ है, like even trams, buses, appointments, interviews के लिए अगर आप जा रहे हैं, friends से मिलने जा रहे हैं. I mean, this is a Swedish quality which actually I kind of love, that they come on time or before time. So मतलब it's very common कि यहाँ पे लोग 5-10 मिनट या 15 मिनट जल्दी आ जाते हैं from the decided time. So this is a thing, it's strange but it's obviously a good strange. और ये चीज़ automatically आपके बॉडी में इनबिल्ट हो जाती है जितने ज़्यादा साल आप यहाँ पे रहते हैं. So now even if I go back to whenever I visit India and I go back to India once a year, even if I'm meeting my friends or anybody else, if we have decided, say for example 3 o'clock, I will, but obviously like मतलब automatically हो जाता है without planning that we reach 15-20 minutes, even half an hour early than the decided time. So this is one strange thing what has come to me after living in Sweden. The next thing what is kind of strange is that I am not a sweet tooth person. I am a salty kind of person. मतलब मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. Of course थोड़ी चीज़ें like गाजर का हलवा and पूरन पोड़ी जो हमारे महाराष्ट्र में होती है. So like if you only these few things I love sweet, but mostly I love salty and chips and chakli and all these, you know, salty things. But I have I think adopted or changed, but I do like the concept of fika जो स्वीडन में काफ़ी famous है. और fika is nothing but having snacks, having a cup of coffee and sweets with your colleagues or your friends or with anybody you want to have with actually. So it's a very kind of a good tradition I must say, and ये काफ़ी offices में भी और बाहर भी even आपके friends को अगर मिलना है तो this is a very common term वो use करते हैं कि चलो फीका लेते हैं या फिर let's meet for fika, let's have fika. So it also is good in the office because आप काम कर रहे हैं तो आपको break मिल जाता है, and then you also have all these sweet dishes what they have like kanel bulle है या फिर शालक मम्स, all these traditional उनके जो sweet dishes है वो काफ़ी famous है यहाँ पे और काफ़ी delicious भी होते हैं. तो अभी office में it's like usually it happens on Friday here, but in my office it happens on Wednesday. So I really am like kind of looking forward to fikas every Wednesday, and अगर जिस हफ्ते में नहीं होता थोड़ा बुरा भी लगता है. So it's like, you know, you get adopted to these kind of traditions after living in a place for long, right? But this is one tradition which has kind of changed me, you can say, from a salty to a sweet person. And I mean, more than actually eating the fika, it's about the break. It's about sitting with the people, talking, having conversations about anything and everything, like about life or या फिर about your weekends. मतलब आप बात करते हैं, आप डिस्कस करते हैं, थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है. So खाने से खाना तो है ही, मतलब whatever it is, but the break I think I appreciate that much more. और यहाँ पे काफ़ी ब्रेक्स भी होते हैं ऑफिस में. लाइक इट्स वेरी कॉमन कि आप किसी कलीग के साथ या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है बंदा, तो आपको अगर उनके साथ बैठ के बातें करनी है या फिर कॉफ़ी पीनी है तो आप कॉफ़ी ब्रेक्स लेके आप कहीं पे भी बैठ के आराम से बात कर सकते हैं. सो नोबडी विल थिंक समथिंग और नोबडी विल बी अपसेट अबाउट इट. सो इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल टू डू दैट हियर इन स्वीडन. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच इज़ a strange thing, has changed me, but it's a good change definitely. Next thing what I think has changed me after coming to Sweden is definitely makeup. And
Yes, I mean, no, I think I don't know if many of you knew, but I was never into makeup before, and of course, I have worked with skincare brands and makeup brands like Revlon and Lakme Lever, but मैं इतना कभी भी makeup नहीं करती थी और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. इंडिया में it's like just put some moisturizer, just put some compact powder, बस हो गया, you know. But यहाँ पे आने के बाद you get lot of complex because this other girls and the Swedish girls are so beautiful. I mean, they are like literally actresses level beautiful, और उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है और उनका मेकअप स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं. एंड फैशन एज पर से इतना एडवांस नहीं है, बट डेफिनेटली मेकअप. सो व्हेन आई केम हियर इनिशियली आई वाज फीलिंग वेरी लाइक आई डोंट नो, लाइक कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता था कि अरे ये लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर मुझे खुद को ही ऐसे फील होता था कि वेरी अंडर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ आई यूज्ड टू फील, एंड आई एम बेसिकली वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. तो इसी की वजह से मैंने मेकअप सीखा एक्चुअली, एंड आई टुक अ शॉर्ट कोर्स बैक इन इंडिया, और मैं काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की खुद से, काफ़ी चीज़ें मैंने खुद से सीखी हैं, एंड देन आई फिगर्ड आउट द मेकअप रूटीन विच इज़ बेस्ट फॉर मी. और आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स, बट ये काफ़ी चीज़ मुझे स्वीडन में आने के बाद मैंने चेंज की है, और अभी तो मुझे मतलब आई हैव बिकम लाइक एन एक्सपर्ट. मैं काफ़ी वेडिंग मेकअप्स एंड एक्टर्स का मेकअप भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और काफ़ी मेकअप मुझे अभी आ गया है. एंड यू नो द वेरी गुड थिंग अबाउट दैट इज़ दी once you grow in your age, you understand that what looks good on you and what doesn't. So I don't have to put layers and layers of makeup on me. Now I know, you know, less is more. तो मैं वो कम ज़्यादा कर देती हूँ. But this is one thing which I don't know if many of you know, but yes, I learned makeup because of Sweden, and after coming to Sweden, definitely. I think the next thing what has changed me, and I found it I mean, not strange as per se, but kind of, you know, having much more appreciation for your family and for your relatives and the extended family as well. I mean, I was never that close to my extended family back in India, और मतलब हम मिलते थे like कभी कभी साल में एक बार और something like that, because everybody stays in different parts of India. अब इतना बिजी होते हैं आपके रूटीन में कि हर जगह पे आपको जाने का टाइम नहीं मिलता, राइट. बट आई थिंक आफ्टर कमिंग हियर आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली पीपल, ऑफ योर पेरेंट्स, एंड हाउ दे हेल्प यू इन so many पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, और डिफरेंट फेजेस में आप कितना कुछ लाइक मिस कर जाते हैं यहाँ पे दूर रहने की वजह से. एंड देन यू मिस ऑल द बर्थडेज, यू मिस ऑल द फेस्टिवल्स, you miss all the milestones, you know, and that has really made me appreciate कि कितना कुछ तुम लोग मिस करते हो. और इंडिया में ऐसा है कि when you live in India you have so many festivals, you have so many traditions. आप रोड ट्रिप लेके ट्रैवल करके आपके फैमिली से मिल सकते हैं, and it's quite easy I think, and कुछ ना कुछ चलता रहता है. So usually there is no time for you to actually sit by yourself and feel sad or think about it, because आजू बाजू में इतने लोग होते हैं. आपके घर से भी अगर बाहर निकले तो 3-4 लोग तो मिल ही जाते हैं आपको हाई बाय करने के लिए, राइट. बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली मेड मी अप्रिशिएट पीपल एंड द हेल्प, ऑफ कोर्स द मेड्स जो इंडिया में हैं, और जो आपको हेल्प एक्सटर्नल मिलती है. इवन व्हेन यू गो टू द रेस्टोरेंट, यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर आप खाएं और कुछ गंदा भी हो जाए, आपके बच्चे अगर गंदा कर दे, तो यू हैव टू क्लीन इट बाय योर सेल्फ. बट इंडिया में आप को वेटर्स होते हैं, ऑफिस बॉयज़ होते हैं सब क्लीन करने के लिए और आपके दूसरे काम करने के लिए. सो नाउ व्हेनेवर आई गो टू इंडिया आई फील लाइक वेरी गिल्टी कि वो लोग उठा रहे हैं डिशेस, बिकॉज यहाँ पे तो वो फैसिलिटी होती नहीं है. तो आई यूजुअली ट्राई टू हेल्प देम, एंड आई फील वेरी बैड टू सी देम वर्क. तो ये भी एक मतलब ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती है वंस यू आर लिविंग आई थिंक इन स्वीडन, एंड यू अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज दिस बिकम्स अ लग्जरी. आई थिंक ऑल द थिंग्स व्हाट आई whenever I go to India and I see, I think this is luxury, and I feel like we are like this poor people living in Sweden, not having all these facilities, not having enough restaurants or food deliveries, and so many variety of food options, maids. You have so much of facility I think in India, and that is cool. It's not here, but of course every place has its pros and cons, and that is what I have realized after living in Sweden. It definitely makes you more humble,
after living in Sweden, because Swedish लोग काफ़ी humble और काफ़ी humility काफ़ी उनमें होती है. They are not that crazy about gold or money and these big things what is there in India. But of course a lot of factors are in place. India is still kind of a developing country, and these people are developed. They have all these facilities from way back, and so all these plus minuses of course I'll cover in some other video, but these are the things topmost in my mind which has changed me and which are so strange, and I have adopted to it now after living in Sweden. So I hope you like this video, guys, and if you've liked it, please do not forget to like, subscribe, comment and share, and I will see you in my next video. Till then, stay positive and stay happy. Bye bye.